Hi everyone, how are you all? Welcome to Bioexplaining. In this video, we are going to talk about the second part of human reproduction, wherein we'll be discussing about the female reproductive system. So, let's begin. Okay, so first क्या करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो सारे पार्ट्स है we let's take an overview of that. ठीक है, तो first you see this diagram from NCERT, which is the female pelvis diagram. It's a diagrammatic sectional view of the female pelvis, which is showing us the reproductive system. ठीक है, तो what are the different parts of the female reproductive system? First, we have the ovaries, right? And there is a pair of ovary. That means how many ovaries are present? 2 ovaries present है. Then oviduct या fallopian tubes वो भी pairs में है. That is 2 are present. Then क्या है? Then uterus is present. Let's see here. Yes, uterus is present. So if I have to point in the diagram, this part is the uterus. Next, what is there? Below the uterus, the cervix is present, right? Then cervix के नीचे क्या है? The vagina is present, and finally the external genitalia is present. External genitalia में क्या क्या आता है? Labia minora, labia majora, vaginal orifice, ये सब है. And along with all of these structures, we will also study about the mammary glands. Okay, so this is an overview. The one by one, now we'll start discussing about each of these in required amount of details. So first, let's start talking about the ovaries. Okay, first thing, ovaries. So the ovaries are known as the primary female sex organs. So what do we mean when we say primary? Primary sex organs means these are the sex organs या फिर ये जो structures है ये सब डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है इन गैमेट फॉर्मेशन. ठीक है, लाइक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मेल गैमेट्स जो है वो है स्पर्म्स इन केस ऑफ ह्यूमंस, एंड फीमेल गैमेट्स क्या है इन केस ऑफ ह्यूमंस, वो है एग या तो ओवम, राइट? सो द ओवरी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट. तो इसीलिए ओवरी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, डायग्राम में आई होप सो हम सब लोग लोकेट कर सकते हैं कौन सा है ओवरी. दिस वन, like I'm highlighting in yellow right now, this is one ovary, and on the other side this is the other ovary which is present. ठीक है, next what we have to know about the ovary? Next we have to know कि function क्या है? As I have just told you, it is known as the primary sex organ because it will produce the gamete, right? तो gamete क्या है? Gamete को हम लोग कहते हैं sex cells. तो in case of human females, gametes क्या है? It is the egg or the ovum. Fine. Now, the ovary also has another function that it will produce the steroid hormones. ठीक है, so ovary has two major functions. पहला क्या हो गया? Gamete production. Second क्या आ गया? Steroid hormones को produce करना, right? तो ये सब hormones को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ovarian hormones. Because the ovary is producing it, it is known as ovarian hormones. जैसे कि मान लो estrogen, जैसे मान लो progesterone, ये टाइप के different steroid hormones are produced by the ovary. ठीक है, now location wise ovary कहाँ पे है? It is present, one ovary is present on each side of the lower abdomen. That is why what we say that they are present in pair, कि दो ovary है, right? On each side of the lower abdomen one ovary is present. And size wise कैसा है? They are approximately 2 to 4 centimeters in length. मतलब they are small structures. Okay. And how are they connected
to the pelvis wall, like they are in the pelvic region, right? So how are they connected to the pelvic wall and to the uterus? There are ligaments present which will connect them or join them to the pelvic wall. Okay. Now let us see कि if you make a cross section of the ovary, क्या बना रहे आप? You are making a cross section of the ovary. So a cross section of the ovary will kind of look like this. ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, जो ground substance है, मतलब yellow part that is made, right? So that entire thing is known as the stroma. ठीक है? The ground substance is known as the stroma. In case of the ovary, stroma is divided into two parts. क्या है वो दो parts? One part is the peripheral, that is the cortex. तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि ये है आउटर पार्ट एंड ये है इनर पार्ट जो कि है मेड्यूला, राइट? तो स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन पार्ट इज द आउटर पार्ट विच इज द कॉर्टेक्स, जिसमें है ओवेरियन फॉलिकल्स, एंड अंदर में क्या है, यू विल कॉल इट टू बी द मेड्यूला, जिसमें न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं. अब ओवरी के एक स्पेशल कवरिंग होते हैं. What is that covering? That covering is a kind of epithelium which is the germinal or ovarian epithelium. And जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि it is a cuboidal epithelium. ठीक है? Not only one layer is present, एक और layer भी present है इसके नीचे. वो क्या है? That is tunica albuginea. तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर क्या है? दिस इज अ लेयर ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो क्या देखा हम लोगों ने कि द स्ट्रोमा और द ग्राउंड टिश्यू ऑफ द ओवरी, इट हैज टू पार्ट्स. आउटर पार्ट को कहते हैं हम लोग कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को कहा जाता है मेड्यूला, राइट? एंड कवरिंग ऑफ द ओवरी इज मेड आउट ऑफ एपिथेलियम. What type of epithelium is that? It is germinal or ovarian epithelium consisting of cuboidal epithelial tissue. तो ovaries के बारे में जो पढ़ना था वो हम लोगों ने देख लिया. Next structure जिसके बारे में पढ़ेंगे वो क्या है? That is the oviduct. Oviduct को also क्या कहा जाता है? It is also known as the fallopian tubes. How many are present? दोनों साइड में एक एक, मतलब the oviduct they are also present in pair. ठीक है? तो साइज में कितना है? They are approximately 10 to 12 centimeter long. And from where to where are they present? From the periphery of each ovary to the uterus. अगर आप डायग्राम को भी केयरफुली देखोगे तो क्या देख, लाइक व्हाट विल यू सी कि ओवरी यहाँ पे है एंड ओवरी के पेरिफेरी मतलब आउटर पार्ट से, फ्रॉम द पेरिफेरी से इट इज स्टार्टिंग एंड वेयर इट इज गोइंग टिल द यूट्रस. फ्रॉम टिल हियर नाउ इट विल जॉइन द यूट्रस. ओके, सो दिस एंटायर रीजन फ्रॉम द external side of the ovary, from the periphery of the ovary to the uterus, this entire region is the oviduct, जिसे हम लोग also क्या कहते हैं? Which is also known as the fallopian tube. Fine. What is there? There are different parts of the oviduct which is present. First part क्या है? First part है infundibulum. I hope you can make it out in the diagram. First part is the infundibulum, मतलब ये वाला part, this part. Okay, so this is the part which is close to the ovary. एकदम ovary के पास जो part है oviduct के, उसे हम लोग कहते हैं infundibulum, right? And if you note, if you look into the diagram carefully, आपको क्या दिखेगा कि infundibulum के end में ऐसे finger-like structures है, right? So what are these finger-like structures known as? These are the structures which is known as fimbriae. Finger-like structures are known as fimbriae. तो function क्या है? तो generally what we know is the ovary is going to release the female gamete, right? Egg बोलो या तो ovum बोलो, जो भी बोलो, the ovary is going to release the female gamete. And ultimately that female gamete
has to travel through the oviduct. So there needs to be some part which will pick up this egg from the ovary. So the infundibulum fimbriae is responsible for collecting or picking up that ovum from the ovary after ovulation. Ovulation क्या है? The process of formation or the process of release of the mature egg. ठीक है? Next, what is the next part of the oviduct? Next आता है ampulla. Again आप diagram में चलिए. तो क्या देखने को मिलेगा? The next wider part is known as the ampulla. And after that, you have the isthmus. This part. So what is the isthmus? It is comparatively narrow. It has a comparatively narrow lumen than the ampulla. Okay. And it will connect this oviduct to the uterus. तो क्या देखने को मिला कि oviduct has three parts to it. एक है infundibulum जो कि ओवरी के एकदम क्लोज है एंड उसके एंड में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिम्ब्री. तो फिम्ब्री विल पिक अप द ओवम फ्रॉम द ओवरी एंड सेंड इट अपवर्ड्स. सेकेंड पार्ट क्या है? एम्प्यूला विच इज अ वाइडर पार्ट. एंड थर्ड पार्ट है isthmus जो कि ओविडक्ट को कनेक्ट करता है विद द यूट्रस. क्लियर? ओके. तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड टू मेजर पार्ट्स. ओवरी के बारे में पढ़ लिया अच्छे से एंड ओविडक्ट या तो फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में भी वी हैव स्टडीड. थर्ड पार्ट व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? नाउ वी विल स्टडी अबाउट द यूट्रस जिसे कॉमन टर्म्स में या कॉमन लैंग्वेज में वूम्ब भी कहा जाता है. ओके. सो द वूम्ब और द यूट्रस is shaped like an inverted pear. कि एक pear को अगर उल्टा कर दोगे तो जैसा shape आएगा, the uterus looks like that. So it is known as an inverted pear-shaped organ. And it is supported by ligaments that are attached to the pelvic wall. How is the uterus attached to the pelvic wall? It is supported by the ligaments, right? Now, uterus के भी क्या है? Just below you can find out this cervix. So वो cervix क्या है? This cervix has its own cervical canal. This part that I am highlighting in yellow. Cervix has its own cervical canal. तो cervical canal and then उसके साथ vagina, which I am now highlighting in the green color. So this part, vagina. दोनों मिला के whatever you get, that is known as the birth canal. ठीक है? The cervical canal and vagina, both of them together will form the passage for the movement of the child from the uterus to outside during childbirth. तो इसीलिए वो entire passage cervical canal and vagina दोनों को साथ मिला के हम लोग birth canal कहते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? यूट्राइन वॉल्स में आइए. ओके, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स और what are the different layers of the uterine wall? There are three layers of tissue which are present in the uterine wall. The first one is the perimetrium. Diagram में you can find out. Diagram में देखा जा रहा है क्या है? This region, the outermost layer, that is the perimetrium. ओके, पेरी वर्ड wherever you see वो क्या है ना, वो आउटसाइड में है, जैसे कि पेरीफेरी मतलब आउटर लेयर, आउटसाइड में है. सो सिमिलरली ये पेरीमेट्रियम क्या है? पेरीमेट्रियम इज द एक्सटर्नल थिन लेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल. देन आता है मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम क्या है? मिडिल वाला लेयर है विच इज कंपैरेटिवली थिकर एंड consists of smooth muscles. Okay, so this one is the myometrium. Now I am highlighting it in yellow. This part, this is the myometrium. Okay, so myometrium का क्या function है? ये दिखाएगा strong contractions during childbirth. Okay, so during childbirth क्या होता है? Strong contractions need to happen. Only then the child which is present inside the womb will be expelled out through this birth canal, right? तो वो contraction
needs to be there. So this strong contraction is exhibited by the muscles of the myometrium layer. Third layer क्या है? Third layer is the endometrium. Wherever in bio you find the word endo. Endo मतलब अंदर, inside, right? So innermost layer जो है वो क्या है? Endometrium. देखो डायग्राम में रेड में हाईलाइट किया गया. This one red. So this part is the endometrium. ठीक है? So it is the inner glandular layer which is present. तो endometrium में क्या है ना कि हर month, in every month, the endometrium will grow. If there is implantation, मतलब if pregnancy is supposed to occur, then endometrial wall will maintain itself. If not, endometrial wall will degrade and it comes out as the menstrual blood. तो क्या देखा जाता है कि एंडोमेट्रियम का साइक्लिकल चेंजेस होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. दैट इज इट विल बी फॉर्म्ड and then if pregnancy does not occur, it will degrade itself and it gets released along with different other blood and other substances as the menstrual blood. Okay, तो clear हुआ what are the different layers of the walls of the uterus? Uterine wall में है perimetrium, एकदम outermost layer जो है. Then आता है myometrium जो कि middle layer है, smooth muscle वाला layer. And then है endometrium जो कि एकदम अंदर वाला layer है. Right? तो क्या क्या देखा अभी तक? ovaries के बारे में पढ़ लिया, oviduct के बारे में पढ़ लिया, and next uterus या तो womb के बारे में पढ़ लिया. Along with that cervix and vagina दोनों मिला के क्या होता है? बर्थ कनाल. तो यहां तक सब कुछ क्लियर है आई गेस. अब क्या बाकी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मैमरी ग्लैंड. तो पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया को करते. तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या पार्ट्स है? लेट अस सी. फर्स्ट थिंग यू हैव इज द मॉन्स प्यूबिस. तो मॉन्स प्यूबिस कौन सा पार्ट है? दिस वन. लेट मी जस्ट हाईलाइट इट इन येलो. तो क्या है ना मॉन्स प्यूबिस? मॉन्स प्यूबिस इट इज अ cushion of fatty tissue. It is a cushion of fatty tissue and it is covered by skin and the pubic hair. So this pubic hair is a layer of protection for the delicate internal organs that are present. ठीक है? Next क्या है? Next, if you notice into the diagram, you'll see labia majora or the large lips is present. I am just highlighting it with the green color here. ठीक है? So this one, this is the labia majora. दोनों side में present है. On both the sides. These are the labia majora. तो नाम से ही पता चलता है labia majora large lips. तो smaller या lesser lips जो है वो क्या होगा? लैबिया माइनोरा. राइट? तो लैबिया माइनोरा को मैं येलो से हाईलाइट करती हूँ यहाँ पे. दीज आर द लैबिया माइनोरा. राइट? तो मॉन्स प्यूबिस हुआ, लैबिया मेजोरा हुआ, लैबिया माइनोरा हुआ. अब क्या है? नाउ जस्ट सी दैट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है. क्या है वो दो ओपनिंग्स? एक तो है यूरेथ्रल ओपनिंग. तो यूरेथ्रल ओपनिंग किस चीज के लिए है? सबको पता है आई गेस, राइट? दैट यूरेथ्रल ओपनिंग इज प्रेजेंट फॉर यूरिनेशन. ओके, दिस इज द ओपनिंग फॉर यूरिनेशन. एंड सेकंड जो ओपनिंग है वो है वजाइना. तो दिस वजाइनल पैसेज और दिस वजाइनल ओपनिंग, दीज आर फॉर रिप्रोडक्शन पर्पसेस. सर्विक्स एंड वजाइना को साथ मिला के हम लोग क्या कहते हैं? साथ मिला के कहते हैं बर्थ कनाल. राइट? सो दिस वजाइनल पैसेज इज फॉर द रिप्रोडक्शन एंड यूरेथ्रा इज फॉर द यूरिनेशन. तो दो अलग अलग ओपनिंग्स है इन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. नाउ what you see is there is a structure which is known as the hymen. तो वो hymen क्या है ना? This is a thin layer of covering which partially covers the vaginal opening. Okay, what it will do? It will partially
cover the vaginal opening. Now, there's a very common misconception. क्या है वो misconception? कि if the hymen is present as it is, that means a person is a virgin. If it is not, the person is not a virgin. This is a very big misconception. ऐसा कुछ है ही नहीं. Why? This is just a myth. Say suppose हम लोग जो है, we do a lot of strenuous physical exercises. You guys are going to the school, coming back from school, you all are cycling, people are doing, they're walking, jogging, running, some people are hitting the gym, doing yoga. All of these are what? Physical exercises hai, right? So because of all these physical activities, strenuous activities, hymen जो है एकदम soft tissue है, तो वो rupture हो सकता है, right? तो हाइमन का प्रेजेंस या एब्सेंस के साथ वर्जिनिटी का कुछ लेना देना नहीं है. दिस इज एन एब्सोल्यूट मिथ दैट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इंडिकेट्स वर्जिनिटी. सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट a reliable indicator of virginity or sexual experience. Fine. Next है clitoris. तो आप क्लिटरिस के लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सी द लैबिया माइनोरा. दोनों साइड के लैबिया माइनोरा देख रहे हो. अब लैबिया माइनोरा ऊपर जाके वेयर दे आर मीटिंग ईच अदर, मतलब व्हाट एम आई ट्राइंग टू से कि एक साइड के लैबिया माइनोरा ये है, तो दूसरे साइड वाला लैबिया माइनोरा ये है, तो वेयर दे आर मीटिंग दिस पोर्शन हैज द क्लिटरिस. तो क्लिटरिस है क्या? क्लिटरिस is a tiny finger-like structure that lies at the upper junction of the labia minora. दोनों साइड के labia minora जहां पे meet कर रहे, that portion is your clitoris. And it is above the urethral opening. मतलब vaginal opening है, थोड़ा ऊपर urethral opening है, on top clitoris है. Why is this clitoris so special? Because it contains a complex network of nerves and erectile tissues. अगर आप लोगों ने already previous part देख लिया है या तो NCERT से अच्छे से पढ़ लिया है regarding the male reproductive system, तो आपको पता होगा कि क्या है कि penis, which is the external genitalia of the males, वहां पे भी है erectile tissues, right? So that is why we say that clitoris is kind of, similar to the male penis. So it has erectile tissues which is similar to the ones that are present in the male penis. Simple, the different parts of the external genitalia in human females. Next है mammary glands, right? तो mammary glands के बारे में क्या है? The functional mammary gland, it is a characteristic of all female mammals. ठीक है? Remember, this is the functional mammary gland, right? It is a characteristic of all female mammals. Now, these are paired structures. मतलब paired structure मतलब दो present है, right? So the paired structure are known as the breasts. There are two breasts present. These breasts will contain glandular tissue. Glandular tissue is present, which contain variable amount of fat. In some people, it will have greater amount of fat. In some people, it will have lesser amount of fat, right? Now, each of the breast के जो glandular tissues है, that has around 15 to 20 mammary lobes. So if you look into the diagram very carefully, क्या है कि individually these are one mammary lobe. Okay, individually these are known as the mammary lobes, right? Getting it? So these mammary lobes, what do they contain? They have cluster of cells. क्या है इनके पास? इनके पास है cluster of cells. And this cluster of cells is what you call to be the alveoli. Right? तो mammary alveolus या तो alveoli कहा जाता है for the cluster of cells जो कि present है mammary lobes के अंदर. And what is its function? It will secrete milk. This is known to all that the
Mammary glands have the function of secreting the milk which is stored in the cavity or the lumen of this gland, right? So, what is the passage of this milk production? That is, milk is produced by the alveoli. Okay, so we can write alveoli produces the milk. Then milk kahan jata hai? Milk jata hai to the mammary tubules. From the mammary tubules, all the different mammary tubules will send the milk to the mammary duct. वहां से जाएगा to the mammary ampulla. Mammary ampulla say it will go to the lactiferous duct. And from the lactiferous duct, it will reach the nipple. And from the nipple, the milk is sucked out by the child. Okay, तो ये क्या है? ये है passage कि from the alveoli to the mammary tubules, from there to the mammary duct, to the mammary ampulla, from that to the lactiferous duct, to the nipple, from where the milk is finally sucked out. So that's it on the topic of the female reproductive system. In the next video, we are going to start discussing about the process of gametogenesis, जहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? Separately spermatogenesis देखेंगे in details and oogenesis देखेंगे in details, and we will understand a comparison of both of these. So please stay tuned. If you like this video, then like, share, comment, and yes, please don't forget to subscribe to my channel by explaining. Thank you. Bye-bye.